Fellow citizens, on the eve of the 68th Republic Day of our nation, I extend warm greetings to all of you in India and abroad. I convey my special greetings to members of our armed forces, paramilitary forces, and internal security forces. I pay my tribute to the brave soldiers and security personnel who made the supreme sacrifice of their lives in defending India's territorial integrity and maintaining law and order. Brothers and sisters, when India attained freedom on 15th August 1947, we did not have an instrument of governance of our own. We waited till 26 January 1950, when the Indian people gave to themselves a constitution to secure for all its citizens justice, liberty, equality, and gender and economic equity. We promised to promote fraternity, dignity of the individual, and unity and integrity of the nation. On that day, we became the largest democracy of the world. The faith and commitment of people gave life to our Constitution, and our founding fathers wisely and carefully steered the new nation past its troubles of being a poor economy with huge regional imbalances and a vast citizenry deprived of even basic necessities. It goes to the credit of the strong institutions of democracy built by our founders that for the last 6.5 decades, Indian democracy has been an oasis of stability in the region troubled by unrest. From a population of 360 million in 1951, we are now a 1.3 billion strong nation. Even then, our per capita income has shown a tenfold increase. Poverty ratio has declined by 2/3. Average life expectancy has more than doubled, and literacy rate has shown a fourfold increase. We are today the fastest growing amongst the major economies of the world. We are the second largest reservoir of scientific and technical manpower, the third largest army, the sixth member of the nuclear club, the sixth member in the race for space, and the 10th largest industrial power. From a net food grains importing country, India is now a leading exporter of food commodities. The journey so far has been eventful, sometimes painful, but most of the times exhilarating. What has brought us thus far will take us further ahead, but we will have to learn to adjust ourselves quickly and deftly to the winds of change. Evolutionary and incremental growth will have to accommodate rapid disruptions brought in by advances of science and technology. Innovation, more so inclusive innovation, will have to become a way of life. Education will have to keep pace with technology. In the race between man and machine, the winner will have to be job generation. The velocity of technology adoption will call for a workforce that is willing to learn and adapt. Our education system will have to join hands with innovation to prepare our youth for lifelong learning. Fellow citizens, our economy has been performing well. In the first half of 2016-17, it grew
at a rate of 7.2%, same as that last year, showing sustained recovery. We are firmly on the path of fiscal consolidation and our inflation level is within comfort zone. Though our exports are yet to pick up, we have managed a stable external sector with sizable foreign exchange reserves. Demonetization, while immobilizing black money and fighting corruption, may have led to temporary slowdown of economic activity. As more and more transactions become cashless, it will improve the transparency of the economy. Brothers and sisters, born in independent India, 3 generations of citizens do not carry the baggage of colonial past. These generations have had the privilege of acquiring education, pursuing opportunities, and chasing dreams in a free nation. This sometimes makes it easy for them to take freedom for granted, to forget the price that extraordinary men and women paid to win this freedom, to forget that the tree of freedom needs constant care and nourishment. Democracy has conferred rights on each one of us, but along with these rights come responsibilities which have to be discharged. Gandhiji said, and I quote, "The highest form of freedom carries with it the greatest measure of discipline and humility. Freedom that comes from discipline and humility cannot be denied. Unbridled license is a sign of vulgarity, injurious alike to self and others." Unquote. Fellow citizens, youth today are brimming with hope and aspirations. They pursue their life goals, which they perceive will bring them fame, success, and happiness with single-minded devotion. They consider happiness as their existential objective, which, of course, is understandable. They search for happiness in the high and lows of day-to-day emotions and in the fulfillment of the objectives they have set for themselves. They look for a job as well as a purpose in life. Lack of opportunities leads to frustration and unhappiness, which manifests itself in anger, anxiety, stress, and aberrations in behavior. This has to be dealt with by inculcating pro-social behavior through gainful employment, active engagement with community, parental guidance, and empathetic response from a caring society. Brothers and sisters, one of my predecessors left on my table a framed quotation which reads, and I quote, "The object of government in peace and in war is not glory of rulers or races, but the happiness of the common man." Unquote. Happiness is fundamental to the human experience of life. Happiness is equally the outcome of economic and non-economic parameters. The quest for happiness is closely tied to sustainable development, which combines human well-being, social inclusion, and environmental sustainability. We must make happiness and well-being of our people as the touchstone of public policy. Many of the flagship initiatives of the government have been designed to promote the well-being of the society. The Swachh Bharat Mission aims at a clean India by 2nd October 2019 to coincide with the 150th birth anniversary of Gandhiji. Increased spending on programs like Mandega is enhancing employment
generation to rejuvenate the rural economy. Aadhaar, with its present reach of over 110 crore people, is helping in direct transfer of benefits, plugging leakages, and improving transparency. The Digital India program is creating a knowledge economy through universal provision of digital infrastructures and platforms for cashless economic transactions. Initiatives like Startup India and Atal Innovation Mission are fostering innovation and new age entrepreneurship. Under the Skill India initiative, the National Skill Development Mission is working on skilling 300 million youth by 2022. Brothers and sisters, it is my firm conviction that India's pluralism and her social, cultural, linguistic, and religious diversity are our greatest strength. Our tradition has always celebrated the argumentative Indian, not the intolerant Indian. Multiple views, thoughts, and philosophies have competed with each other peacefully for centuries in our country. A wise and discerning mind is necessary for democracy to flourish. More than the unison of ideas, a healthy democracy calls for conformity to the values of tolerance, patience, and respect for others. These values must reside in the hearts and minds of every Indian, inculcating in them a temperament of understanding and responsibility. Fellow citizens, we have a noisy democracy, yet we need more and not less of democracy. The strength of our democracy is evident by the fact that over 66% of the total electorate of 834 million voted in the 2014 general elections. The depth and breadth of our democracy sparkles in the regular elections being held in our Panchayati Raj institutions, and yet our legislatures lose sessions to disruptions when they should be debating and legislating on issues of importance. Collective efforts must be made to bring the focus back to debate, discussion, and decision making. As our republic enters her 68th year, we must acknowledge that our systems are not perfect. The imperfections have to be recognized and rectified. The settled complacencies have to be questioned. The edifice of trust has to be strengthened. The time is also ripe for a constructive debate on electoral reforms and a return to the practice of the early decades after independence, when elections to Lok Sabha and state assemblies were held simultaneously. It is for the Election Commission to take this exercise forward in consultation with political parties. Fellow citizens, in a fiercely competitive world, we have to work harder than ever to redeem the promises that we make to our people. We have to work harder because our war on poverty is not yet over. Our economy is yet to grow at over 10% for an extended period of time to make a significant dent on poverty. 1/5 of our countrymen still remain below poverty line. Gandhiji's mission to wipe every tear from every eye still remains unfulfilled. We have to work harder to provide food security to our people and to make the agriculture sector resilient to the vagaries of nature. We have to provide better amenities and opportunities to our people in villages to ensure a decent quality of life. We have to work harder to provide enhanced employment
opportunities to our youth through the creation of a world-class manufacturing and service sector. The competitiveness of the domestic industry has to be improved by focusing on quality, productivity, and efficiency. We have to work harder to provide safety and security to our women and children. Women must be able to lead their lives with honor and dignity. Children must be able to enjoy their childhood to the fullest. We have to work harder to change our consumption pattern, which has resulted in environmental and ecological degradation. We have to appease nature to prevent it from unleashing its fury in the form of floods, landslides, and droughts. We have to work harder because our pluralistic culture and tolerance are still being put to test by vested interests. Reason and moderation should be our guide in dealing with such situations. We have to work harder to keep at bay the dark forces of terrorism. These forces have to be dealt with firmly and decisively. The forces inimical to our interests cannot be allowed to grow. We have to work harder to ensure well-being of our soldiers and security personnel who protect us from internal and external threats. And we have to work harder because we are all equal children before our mother. And our motherland asks each of us, in whatever role we play, to do our duty with integrity, commitment, and unflinching loyalty to the values enshrined in our Constitution. Jai Hind! प्यारे देशवासियों, हमारे राष्ट्र के 68वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर मैं भारत और विदेशों में बसे आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं। मैं सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों और आंतरिक सुरक्षा बलों के सदस्यों को अपनी विशेष बधाई देता हूं। मैं उन वीर सैनिकों और सुरक्षा कर्मियों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने भारत की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने और कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। भाइयों और बहनों, 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ, हमारे पास अपना कोई शासन दस्तावेज नहीं था। हमने 26 जनवरी 1950 तक प्रतीक्षा की, जब भारतीय जनता ने इसके सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता तथा लैंगिक और आर्थिक समता के लिए स्वयं को एक संविधान सौंपा। हमने भाईचारे, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को प्रोत्साहित करने का वचन दिया। उस दिन हम विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बन गए। लोगों के विश्वास और प्रतिबद्धता ने हमारे संविधान को जीवन प्रदान किया और हमारे राष्ट्र के संस्थापकों ने बुद्धिमता और सजगता के साथ भारी क्षेत्रीय असंतुलन और बुनियादी आवश्यकताओं से भी वंचित विशाल नागरिक वर्ग वाली एक गरीब अर्थव्यवस्था की तकलीफों से गुजरते हुए नए राष्ट्र को आगे बढ़ाया। हमारे संस्थापकों द्वारा निर्मित लोकतंत्र की मजबूत संस्थाओं को यह श्रेय जाता है कि पिछले 6.5 दशकों से भारतीय लोकतंत्र अशांति से ग्रस्त क्षेत्र में स्थिरता का मरुउद्यान रहा है। 1951 में 36 करोड़ की आबादी की तुलना में अब हम 1.3 अरब आबादी वाले एक मजबूत राष्ट्र हैं। उसके बावजूद हमारी प्रति व्यक्ति आय में 10 गुना वृद्धि हुई है। गरीबी अनुपात में 2/3 की गिरावट आई है। औसत जीवन प्रत्याशा दुगनी से अधिक हो गई है और साक्षरता दर में 4 गुना बढ़ोतरी हुई है। आज हम विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था हैं।
हम वैज्ञानिक और तकनीकी जनशक्ति के दूसरे सबसे बड़े भंडार, तीसरी सबसे विशाल सेना, न्यूक्लियर क्लब के छठे सदस्य, अंतरिक्ष की दौड़ में शामिल छठे सदस्य और 10वीं सबसे बड़ी औद्योगिक शक्ति हैं। एक निबल खाद्यान्न आयातक देश से भारत अब खाद्य वस्तुओं का एक अग्रणी निर्यातक बन गया है। अब तक की यात्रा घटनाओं से भरपूर, कभी कभी कष्टप्रद, परंतु अधिकांश समय आनंददायक रही है। जैसे हम यहां तक पहुंचे हैं, वैसे ही और आगे भी पहुंचेंगे, परंतु हमें बदलती हवाओं के साथ तेजी से और दक्षतापूर्वक अपने रुख में परिवर्तन करना सीखना होगा। प्रगतिशील और बुद्धिगत विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की उन्नति से पैदा हुए तीव्र व्यवधानों को समायोजित करना होगा। नवाचार और उससे भी अधिक समावेशी नवाचार को एक जीवन शैली बनाना होगा। शिक्षा को प्रौद्योगिकी के साथ आगे बढ़ना होगा। मनुष्य और मशीन की दौड़ में जीतने वाले को रोजगार पैदा करना होगा। प्रौद्योगिकी अपनाने की रफ्तार के लिए एक ऐसे कार्यबल की आवश्यकता होगी जो सीखने और स्वयं को ढालने का इच्छुक हो। हमारी शिक्षा प्रणाली को, हमारे युवाओं को जीवन पर्यंत सीखने के लिए नवाचार से जोड़ना होगा। प्यारे देशवासियों, हमारी अर्थव्यवस्था चुनौतीपूर्ण वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद अच्छा प्रदर्शन करती रही है। 2016-17 के पूर्वार्ध में पिछले वर्ष की तरह इसमें 7.2% की दर से वृद्धि हुई और इसमें निरंतर उभार दिखाई दे रहा है। हम मजबूती से वित्तीय दृढ़ता के पथ पर अग्रसर हैं और हमारा मुद्रास्फीति का स्तर आरामदायक है। यद्यपि हमारे निर्यात में अभी तेजी आनी बाकी है, परंतु हमने विशाल विदेशी मुद्रा भंडार वाले एक स्थिर बाहरी क्षेत्र को कायम रखा है। काले धन को बेकार करते हुए और भ्रष्टाचार से लड़ते हुए विमुद्रीकरण से आर्थिक गतिविधि में कुछ समय के लिए मंदी आ सकती है। लेन देन के अधिक से अधिक नकदी रहित होने से अर्थव्यवस्था की पारदर्शिता बढ़ेगी। भाइयों और बहनों, स्वतंत्र भारत में जन्मी नागरिकों की 3 पीढ़ियां औपनिवेशिक इतिहास के बुरे अनुभवों को साथ लेकर नहीं चलती हैं। इन पीढ़ियों को स्वतंत्र राष्ट्र में शिक्षा प्राप्त करने, अवसरों को खोजने और एक स्वतंत्र राष्ट्र में सपने पूरे करने का लाभ मिलता रहा है। इससे उनके लिए कभी कभी स्वतंत्रता को हल्के में लेना, असाधारण पुरुषों और महिलाओं द्वारा इस स्वतंत्रता के लिए चुकाए गए मूल्यों को भूल जाना और स्वतंत्रता के पेड़ की निरंतर देखभाल और पोषण की आवश्यकता को विस्मृत कर देना आसान हो जाता है। लोकतंत्र ने हम सबको अधिकार प्रदान किए हैं, परंतु इन अधिकारों के साथ साथ दायित्व भी आते हैं जिन्हें निभाना पड़ता है। गांधी जी ने कहा, आजादी के सर्वोच्च स्तर के साथ कठोर अनुशासन और विनम्रता आती है। अनुशासन और विनम्रता के साथ आने वाली आजादी को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। अनियंत्रित स्वच्छंदता असभ्यता की निशानी है, जो अपने और दूसरों के लिए समान रूप से हानिकारक है। प्यारे देशवासियों, आज युवा आशा और आकांक्षाओं से भरे हुए हैं। वे अपने जीवन के उन लक्ष्यों को लगन के साथ हासिल करते हैं जिनके बारे में वे समझते हैं कि वे उनके लिए प्रसिद्धि, सफलता और प्रसन्नता लेकर आएंगे। वे प्रसन्नता को अपना अस्तित्व परक उद्देश्य मानते हैं, जो स्वाभाविक भी है। वे रोजमर्रा की भावनाओं के उतार चढ़ाव में और अपने लिए निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति में प्रसन्नता खोजते हैं। वे रोजगार के साथ साथ जीवन का प्रयोजन भी ढूंढते हैं। अवसरों की कमी से उन्हें निराशा और दुख होता है, जिससे उनके व्यवहार में क्रोध, चिंता, तनाव और असामान्यता पैदा होती है। लाभकारी रोजगार समुदाय के साथ सक्रिय जुड़ाव,
माता पिता के मार्गदर्शन और एक जिम्मेवार समाज की सहानुभूति के जरिए उनमें समाज अनुकूल आचरण पैदा करके इससे निपटा जा सकता है। भाइयों और बहनों, मेरे एक पूर्ववर्ती ने मेरी मेज पर फ्रेम किया हुआ कथन छोड़ा जो इस प्रकार था: शांति और युद्ध में सरकार का उद्देश्य शासकों और जातियों की महिमा नहीं है, बल्कि आम आदमी की खुशहाली है। खुशहाली जीवन के मानवीय अनुभव का आधार है। खुशहाली समान रूप से आर्थिक और गैर आर्थिक मानदंडों का परिणाम है। खुशहाली के प्रयास सतत विकास के साथ मजबूती से जुड़े हुए हैं, जिसमें मानव कल्याण, सामाजिक समावेशन और पर्यावरण को बनाए रखना शामिल है। हमें अपने लोगों की खुशहाली और बेहतरी को लोक नीति का आधार बनाना चाहिए। सरकार की प्रमुख पहलों का निर्माण समाज के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन का लक्ष्य गांधी जी की 150वीं जयंती के साथ 2 अक्टूबर 2019 तक भारत को स्वच्छ बनाना है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बहाली के लिए मनरेगा जैसे कार्यक्रमों पर बढ़े व्यय से रोजगार में वृद्धि हो रही है। 110 करोड़ से अधिक लोगों तक अपनी वर्तमान पहुंच के साथ आधार लाभों के सीधे अंतरण आर्थिक नुकसान रोकने और पारदर्शिता बढ़ाने में मदद कर रहा है। डिजिटल भारत कार्यक्रम डिजिटल ढांचे के सर्वव्यापक प्रावधान और नकदी रहित आर्थिक लेन देन साधनों के द्वारा एक ज्ञानपूर्ण अर्थव्यवस्था का निर्माण कर रहा है। स्टार्टअप इंडिया और अटल नवाचार मिशन जैसी पहलें नवाचार और नए युग की उद्यमिता को प्रोत्साहन दे रही हैं। कौशल भारत पहल के अंतर्गत राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन 2022 तक 30 करोड़ युवाओं को कौशल युक्त बनाने के लिए कार्य कर रहा है। भाइयों और बहनों, मुझे पूरा विश्वास है कि भारत का बहुलवाद और उसकी सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषाई और धार्मिक अनेकता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमारी परंपरा ने सदैव असहिष्णु भारतीय नहीं बल्कि तर्कवादी भारतीय की सराहना की है। सदियों से हमारे देश में विविध दृष्टिकोणों, विचारों और दर्शन ने शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ स्पर्धा की है। लोकतंत्र के फलने फूलने के लिए एक बुद्धिमान और विवेकपूर्ण मानसिकता की जरूरत है। एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए विचारों की एकता से अधिक सहिष्णुता, धैर्य और दूसरों का सम्मान जैसे मूल्यों का पालन करने की आवश्यकता होती है। ये मूल्य प्रत्येक भारतीय के हृदय और मस्तिष्क में रहने चाहिए, जिससे उनमें समझदारी और दायित्व की भावना भरती रहे। प्यारे देशवासियों, हमारा लोकतंत्र कोलाहलपूर्ण है, फिर भी जो लोकतंत्र हम चाहते हैं वह अधिक हो, कम न हो। हमारे लोकतंत्र की मजबूती इस सच्चाई से देखी जा सकती है कि 2014 के आम चुनाव में कुल 83 करोड़ 40 लाख मतदाताओं में से 66% से अधिक ने मतदान किया। हमारे लोकतंत्र का विशाल आकार हमारे पंचायती राज संस्थाओं में आयोजित किए जा रहे नियमित चुनावों से झलकता है। फिर भी हमारे कानून निर्माताओं को व्यवधानों के कारण सत्र का नुकसान होता है, जबकि उन्हें महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहस करनी चाहिए और विधान बनाने चाहिए। बहस, परिचर्चा और निर्णय पर पुनः ध्यान देने के सामूहिक प्रयास किए जाने चाहिए। जबकि हमारा गणतंत्र अपने 68वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है, हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि हमारी प्रणालियां श्रेष्ठ नहीं हैं। त्रुटियों की पहचान की जानी चाहिए और उनमें सुधार लाना चाहिए। स्थायी आत्मसंतोष पर सवाल उठाने होंगे। विश्वास की नींव को मजबूत होगा। चुनावों पर परिचर्चा करने और स्वतंत्रता के उन दशकों की लौट आ गया है। सभा और विधानसभाओं के
एक साथ किए जाते थे। राजनीतिक दार विमर्श से कार्य को चुना का दायित्व है। प्यारे देश भयंकर रूप से प्रतिस्पर्धी विश्व में हमें अपनी जनता के साथ किए गए वायदों को पूरा करने के लिए पहले से अधिक परिश्रम करना होगा। हमें और अधिक परिश्रम करना होगा, क्योंकि गरीबी से हमारी लड़ाई अभी समाप्त नहीं हुई है। हमारी अर्थव्यवस्था को अभी भी गरीबी पर तेज प्रहार करने के लिए दीर्घकाल में 10% से अधिक वृद्धि करनी होगी। हमारे देशवासियों का 5वां हिस्सा अभी तक गरीबी रेखा से नीचे बना हुआ है। गांधी जी का प्रत्येक आंख से हर एक आंसू पोंछने का मिशन अभी भी अधूरा है। हमें अपने लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए और प्रकृति के उतार चढ़ाव के प्रति कृषि क्षेत्र को लचीला बनाने के लिए और अधिक परिश्रम करना है। हमें जीवन की श्रेष्ठ गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए गांवों के हमारे लोगों को बेहतर सुविधाएं और अवसर प्रदान करने होंगे। हमें विश्व स्तरीय विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों के सृजन द्वारा युवाओं को और अधिक रोजगार अवसर प्रदान करने के लिए अधिक परिश्रम करना है। घरेलू उद्योग की स्पर्धात्मकता में गुणवत्ता, उत्पादकता और दक्षता पर ध्यान देकर सुधार लाना होगा। हमें अपनी महिलाओं और बच्चों को सुरक्षा और संरक्षा प्रदान करने के लिए और अधिक परिश्रम करना है। महिलाओं को सम्मान और गरिमा के साथ जीवन जीने में सक्षम बनना चाहिए। बच्चों को पूरी तरह से अपने बचपन का आनंद उठाने में सक्षम होना चाहिए। हमें अपने उन उपभोग तरीकों को बदलने के लिए और अधिक परिश्रम करना है जिनसे पर्यावरणीय और पारिस्थितिकीय प्रदूषण हुआ है। हमें बाढ़, भूस्खलन और सूखे के रूप में प्रकोप को रोकने के लिए प्रकृति को शांत करना होगा। हमें और अधिक परिश्रम करना होगा, क्योंकि निहित स्वार्थों द्वारा अभी भी हमारी बहुलवादी संस्कृति और सहिष्णुता की परीक्षा ली जा रही है। ऐसी स्थितियों से निपटने में तर्क और संयम हमारे मार्गदर्शक होने चाहिए। हमें आतंकवाद की बुरी शक्तियों को दूर रखने के लिए और अधिक परिश्रम करना है। इन शक्तियों का दृढ़ और निर्णायक तरीके से मुकाबला करना होगा। हमारे हितों की विरोधी इन शक्तियों को पनपने नहीं दिया जा सकता। हमें अपने उन सैनिकों और सुरक्षा कर्मियों की बेहतरी को सुनिश्चित करने के लिए और अधिक परिश्रम करना है, जो आंतरिक और बाहरी खतरों से हमारी रक्षा करते हैं। हमें और अधिक परिश्रम करना है, क्योंकि हम सभी अपनी मां के लिए एक जैसे बच्चे हैं और हमारी मातृभूमि हम में से प्रत्येक से, चाहे हम कोई भी भूमिका निभाते हों, हमारे संविधान में निहित मूल्यों के अनुसार निष्ठा, समर्पण और दृढ़ सच्चाई के साथ अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए कहती है। जय हिंद।